Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so as you all know, we are conducting the series of options for the beginners. So this is the third chapter of this series. If you haven't checked the first two chapters, then please go and check those out first two chapters, and then come to this chapter number three. So in this chapter, we are going to see the next thing, that is. Okay, so Greeks, that is the chapter that we are going to see in this chapter. In fact, so there are five option Greeks factors which really affect the option premium for any option premium. In fact, and I have listed down them on my screen. As you can see, Vega, Delta, Gamma, Vix, that is IV also we can call, and Theta. So these are the five factors of Greeks which really affect the option premium. So guys, I'm not going to tell you the theoretical definitions of all these Greeks. So I'm just going to tell you the how these factors affects the option premium practically. Okay, so let's go and first check it out. The first one. Okay, the first one is Vega. Okay, so what is Vega? So when Vega is negative of any option prime, it's of any option, that it means you are assuming the market is going to be the sideways. Okay, and when Vega is neutral or positive, a little bit positive, then it means you are assuming the market will be very volatile. Okay, so as you know, there are a few option strategies like iron counter. We always get Vega negative, while in calendar spread, that is again one of the option strategy. So in that we get positive Vega. So it means accordingly you can shape your option strategy, considering the Vega into the effect. So ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप कोई ऑप्शन प्राइस कोई भी चुनने से पहले वीगा भी चेक कर ले किसी भी ऑप्शन का. ओके, नेक्स्ट वन इज डेल्टा. सो डेल्टा में क्या होता है एक्चुअली, लेट्स से कि किसी भी निफ्टी ऑप्शन का डेल्टा है 0.2, एंड नाउ कंसिडर कि निफ्टी मूव्स बाय 100 पॉइंट्स. इन दिस केस 100 पॉइंट से मूव होता है, तो इन दैट केस ऑप्शन प्राइस विल मूव बाय 20 पॉइंट्स. ऑप्शन का प्राइस सिर्फ 20 पॉइंट्स से ही मूव होगा. ओके, क्योंकि उसका डेल्टा है 0.2. बट बट इट कैन ऑल्सो हैपन, सी अगर डेल्टा 0.2 है किसी ऑप्शन का, एंड निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव होता है, तो यू कांट से ऑलवेज कि इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो 20 पॉइंट से ही मूव होगा. इट कैन मूव फ्रॉम 15 पॉइंट्स टू 25 पॉइंट्स ऑल्सो. एंड वाई दिस इज हैपन ना, आप पूछोगे कि अगर आपने बोला सर 0.2 सिर्फ अगर डेल्टा है तो 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी मूव होता है तो 20 पॉइंट्स ही उस ऑप्शन प्रीमियम मूव होगा. सो ऐसा नहीं होता. ये ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, सो क्या क्या होता है कि अगर क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं जो कि ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड करते हैं, लाइक विक्स एंड आईवी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड लेट्स से कि अगर निफ्टी ऑप्शंस मूव होता है 25 पॉइंट्स ऑप्शन प्रीमियम instead of 20 points, and the same option price can move to 15 points instead of 20 points if its VIX is falling. Okay, and this happens because of theta gets impacted directly with VIX and its movement, in fact. Okay, एंड एटीएम ऑप्शन प्राइसेस जो होते हैं डेल्टा वैल्यूज, जो एटीएम एट द मनी, मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था व्हाट इज एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम. एटीएम जो एट द मनी ऑप्शन प्राइस होता है, उसका डेल्टा हमेशा 0.5 और उसके नियर बाय ही होता है, ऑलवेज ऑलवेज. ओके, और इन द मनी जो ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं वो उसका डेल्टा हमेशा नियर टू 1 होता है. मीन जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाओगे उसका डेल्टा हाईएस्ट होते जाएगा टूवर्ड्स 1, एंड आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है वो नियर टू 0 होता है. जैसे जैसे आप डेल्टा की फार अवे फ्रॉम एट द मनी प्राइसेस होते जाओगे उसका डेल्टा नियर टू 0 होते जाएगा. ओके, सो दिस इज डेल्टा. Now gamma, what is gamma? Okay, so gamma is kind of catalyst to delta. So delta क्या होता है कि आपने अभी देखा कि ऑप्शन की प्राइस में जैसे चेंज होता है, that is called as delta, and the change in delta prices is called as gamma. Okay, so we can in a way we can also say the prices, gamma can move option prices from 10 to 200 or even 300. That is called as gamma effect. और एक gamma ज़्यादा powerful कब होता है? At expiries. When expiry comes near or on the expiry day, gamma becomes very powerful. Okay, so therefore sometimes we also say gamma
Gamma is a friend of option buyers because there are few gamma players in fact in the market. What they do, they just go and buy let's say ki 1 rupee option premium price, and if the gamma effect comes into the play, then 1 rupee price of option that can suddenly becomes 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees. So this is why how they can multiply their money. बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज जो ऑप्शन की प्राइसेस अगर वन चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गोइंग टू हैपन दैट ऑप्शन की प्राइस जो है वो ज़ीरो ही होने वाली है. बट समटाइम्स इफ मार्केट मूव्स suddenly if market moves 1% or 2% nifty, let's say, then in that case that gamma effect comes into the picture, and option prices can gets very wilder in this case. So that is gamma. Okay, so next is VIX or IV. So what is VIX and IV? IV is nothing but implied volatility that is a term which we use for the stocks, and VIX, this is the term which we use for indices. Okay, indices के लिए हम VIX यूज करते हैं और stocks के लिए हम जो है IV यूज करते हैं. As simple as that. Okay. विक्स का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होता है एवरीडे. इनफैक्ट जैसे कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम वे विक्स का प्राइस भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है. एंड लेट्स से कि विक्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है देन ये हमेशा बेनिफिशियल होता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि जब विक्स का प्राइस बढ़ रहा होता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं या घटते हैं. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑप्शन बायर्स, एंड इफ इज विक्स इज डिक्रीजिंग इट विल बेनिफिट द ऑप्शन सेलर्स. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑप्शन सेलर्स अगर विक्स डिक्रीज हो रहा है, विक्स इंडिया, विक्स पर्टिकुलर आईवी फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक. अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टाइम विक्स अगर इंक्रीज हो रहा है देन मार्केट इज फॉलिंग एंड वाइस वर्सा, ये हमेशा होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है कि अगर मार्केट शार्पली फॉल कर रहा है, फॉल ही कर रहा है, इट मीन्स एट द सेम टाइम यू गो एंड जस्ट चेक द विक्स, इट इज़ 100% इंक्रीजिंग. Okay, in most of the cases it increases. I'm not saying that it is always going to happen. Sometimes it also happens that market is also increasing and VIX is also on the increasing side. बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई से 70% टाइम्स क्या होगा कि अगर मार्केट शार्पली फॉल कर रहा है तो वीक से इंक्रीज हो रहा होगा. इन सच केसेस द पुट के जो प्राइसेस होते हैं ना, पुट प्रीमियम्स, दे आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. बट कॉल प्राइसेस जो होते हैं ना, जो ड्रॉ, क्योंकि जो यूजुअली कैसे होता है अगर पुट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉल ऑफकोर्स डिक्रीज होता है. बट अगर विक्स इंक्रीज हो रहा है बहुत तेज़ी से, सो इट इज़ गोइंग टू हैपन दैट पुट के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन कॉल के प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगे. लेट मी रिपीट, कॉल के प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगे. ऐसे सिनेरियो में आपको जाके कॉल सेल करने से कुछ भी नहीं होने वाला. कॉल सेल कर दिए वो जगह पे ही रुक जाएगा, लेकिन मार्केट वो नीचे नीचे जाता जाएगा. सो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर ऑप्शन सेलर. In such a cases क्या होगा कि ऑप्शन, इट इज़ गुड टू बाय पुट ऑप्शंस बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग वेरी शार्पली विद द मार्केट फॉलिंग मार्केट. Okay, so it is always better to buy put options in this such a scenarios instead of selling call options. So that is weeks. So next is theta. So most of the guys are always I think anyways didn't know what is theta, because theta is a very common term which we use for in the market. Theta usually everyone know that theta is option seller's friend, because theta क्या होता है, जैसे ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन की जो प्राइसेस होती है वो डे बाय डे डिके होती जाती है एंड ऑन एक्सपायरी जो ओ टी एम ऑप्शन होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन फॉर कॉल्स एंड पुट प्रीमियम्स, वो सब ज़ीरो ही होने वाले होते हैं. So that is theta effect. Okay, so this is all about all the Greeks which I explained you guys. So still if you do have any let's say कि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है स्टिल ग्रीक्स के रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा. Okay. So that's it for today's video. So we will see you. I will see you in the next video with a new chapter number 4. ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकन. सो अगर आप ये सब कर रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, कि मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है एंड दे आर एंजॉइंग
दिस लर्निंग फेज ऑफ ऑप्शंस। एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और सारे वीडियोस बनाऊँ। दिस इज़ नॉट द ओनली सीरीज विच आई एम मेकिंग इन फैक्ट, सो देर आर ऑल्सो फ्यू अदर वीडियोस आई एम अपलोडिंग लाइक द डिफरेंट डिफरेंट strategies for advanced option traders, and this is the series for beginners in fact, but I am also same time uploading the videos for option advanced traders in fact, बिकॉज ऐसी ऐसी मैंने स्ट्रैटेजी यूनिक स्ट्रैटेजीज में और सारी बहुत सारी डालने वाला हूँ। आप यूट्यूब पे मीन्स मेरे चैनल पे आके ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि मैं फ्यू स्ट्रैटेजीज मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय किए हैं और उसका वीडियो भी बना के डाल दिया है। एंड मैं और बहुत सारी ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। Okay, so thank you everyone. So that's it for today's video. See you in the next video. Bye.